Okay, you're live. Assalamu alaikum everyone. This is me Ayman from Homeschooling and Smart Parenting, and today we are with our special guest जो हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन this is another time because I have been receiving a lot of queries कि homeschooling किस तरीके से करनी है, खासकर these two specific countries जहाँ पर हमारे पास followers बहुत ज़्यादा हैं इस communities हमारी community में पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट. सो आई हैव बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि किस तरीके से होम स्कूलिंग करना है. वी हैव अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, हर कंट्री के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं. सो वी डू हैव दिस सेशन फॉर यू गाइज. सो जो हमें ज्वाइन कर रहा है, डू लेट अस नो इफ वी आर ऑडिबल, वी आर विजिबल, ताकि हम अपना सेशन का आगाज कर सके. मीनवाइल आई विल बी शेयरिंग ऑल द लिंक्स ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको स्पेशली जो हूँ वो इनबॉक्स कर सकूं, ताकि मैं ये लिंक्स जब तक मैं फॉरवर्ड कर लेती हूँ. आप लोग अगर हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो काइंडली कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि इफ वी आर ऑडिबल और विजिबल, या कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हम अपने सेशन को स्टॉप करके पॉज करके विल जस्ट लुक इनटू इट एंड देन विल जस्ट स्टार्ट विद आवर सेशन. So, and also you can do tag anyone if you like, because the page is public. You can tag your friends and family, and even you can share or copy the link and share it on the WhatsApp, or later on even अगर आपके पास अभी टाइम नहीं बचता and आप लोग अभी ज्वाइन नहीं कर सकते हमें, तो आप हमें बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं. So we have two special guests today. One is manager of Academy, Operations Academy, Learn Academy, and then we have a coding instructor from the same academy. So before starting the session, do let us know in the comments if we are audible or visible, and then we will start with our lesson. Session. Meanwhile, I'll be just sharing the links. Thank you so much, everyone. Do let us know in the comments, please. जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि हमारी आवाज क्लियर है, हमारी पिक्चर क्लियर है, इफ योर वीडियो इज विजिबल एंड वी आर ऑडिबल, सो वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन. We'll wait for a few minutes and then we'll start. Okay. Okay, I have received the comment. Thank you so much, Madiha. We have received the comment. The voice is clear and we are audible and we are visible. So let's start with our session. Today, the topic, the hot topic, आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है, everyone is discussing how is this online schooling works. ठीक है?
we have been receiving every time, मतलब बहुत दफा पेरेंट्स ये सोचते थे कि okay, the pandemic has ended, alhamdulillah, and now we are not supposed to send our means we are not supposed to go for the online schooling, and we are going to send the students to the public school from traditional school. They are going to go on site in the school, and they are going to experience everything. ठीक है, so online schools are here to stay, but even after the pandemic, online schools work much more like conventional school, which with added convenience of a virtual platform. So here I'm going to tell you something about online schooling, जिनको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि online school है क्या, and they just signing up to an online school, mothers feel like a difficulty, and they see like no, so much of screen time, and how will they get to socialize with others, और वो सारी चीजें they are going to stay behind, or anything जो भी आपकी queries होंगे वो यहाँ इस जो platform है और इस session में इंशाल्लाह they're going to answer. So what is actually the online school? Students can learn from anywhere if they have a good internet connection. More and more virtual schools are beginning, and this is the reality for students and parents as well. But if you don't know what online learning looks like, then this session is for you, and you might think that signing up your child to an online learning can be a scary proposition. So this is the session for you, where you can get to know what is this online schooling all about, and how we can do homeschooling at any country you live in, and you can still you can create a better environment for your child at home. So we have two guests today with us. Fiza Ali, she has been with us before as well. We have conducted an online session with her, and now I'm going to introduce her again. So Fiza Ali has been with Learn Academy since 2021, and she has started Learn Academy as a maths teacher, and later she promoted to subject had maths, and then later on she is now the academic manager operations at Learn Academy. And now she is also pursuing her degree in MBA. She always wanted to be an educator prior to Learn Academy, and she has been teaching students online on a freelance basis. But later, then now she has already joined Learn Academy. She is the part of Learn Academy family. So before introducing the Learn Academy, ये academy कौन सी है, and why are we talking about this academy on and off, I am going to share a short video with you. I'm going to share the screen with you. तो आप छोटा सा उसका clip देखिएगा Learn Academy के बारे में. What is Learn Academy all about, and how it is going to benefit your child online as a homeschooler, or as a God gifted child mother, or you can say as a जो बच्चे जो डेवलपमेंटली या जो डिलेज बच्चे हैं उनके लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगा, नॉट ओनली फॉर द बल्कि हर कैटेगरी के बच्चे उससे किस तरीके से फायदेमंद हो सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फर्स्ट. आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियो विथ यू ऑल, एंड देन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस फिजा, और फिजा के हैंड ओवर करते हैं हम इंशाल्लाह. सो दिस इज आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियो.
ओके, तो आई गेस इट्स छोटी सी वीडियो के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा व्हाट दिस एकेडमी लुक्स लाइक, लेकिन और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि मदर्स अक्सर हमसे पूछ रही होती हैं कि हाउ दिस ऑनलाइन होम स्कूलिंग वर्क्स, लाइक वी आर नॉट एजुकेटेड इनफ कि हम अपने बच्चों को वैसी एजुकेशन दे सकें, और उसके बाद हमें एक प्रॉपर होम स्कूल प्रोवाइडर की जरूरत होती है। फिर वहाँ होम स्कूल प्रोवाइडर में होता है कि देन स्टिल यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज आपको खुद ना कुछ इनपुट देना पड़ता है। बट दिस अकेडमी इज समथिंग लाइक all in one. You have got all in one. You have got the affiliation, you have got the attestation, and then you have got the amazing teachers, the amazing platform, and the affordable fee. What else you need? So now we are going to introduce our two guests today, Fiza Ali, जिनके बारे में मैं आपको already बता चुकी हूँ, and then we have our second guest. He is coding instructor at this Learn Academy. So starting with the bombardment of questions from Fiza first, and then we'll go with the our coding the coding instructor of Learn Academy. अच्छा, अब हमने बहुत सारे लोगों से सुना होता है कि ठीक है, लर्निंग की जो ऑनलाइन टीचिंग की जो जॉब होती है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल, एंड एवरीवन नोज दैट इट्स रियली नाइस दैट आपको घर बैठे बैठे कोई जॉब मिल जाती है, यू आर अ मदर, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स एंड यू गेट टू हैव द जॉब एट ऑनलाइन, एंड देन यू कैन हैव दैट सैलरी दैट you feel like, okay, it's like I'm a housewife and I'm running my home and I'm also doing a job. But Fiza, we would like to know that benefits of teaching online everyone knows, but what are the benefits of learning online that everyone wants to know? So please do let us know. See, when Assalamu alaikum everyone, when you talk about the benefits of teaching online, उसमें देखिए, let's start with the definition पहले कि ऑनलाइन क्या है, आपके पास ट्रेडिशनल स्कूल क्या है। आफ्टर कोविड हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि students started taking students started getting out of traditional school and they were put into an online system. अब ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है कि नॉर्मली आपको लग रहा होता है कि मे बी आप एक ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे आपके पास सोशल इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। आप एक ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे इन अ लॉट ऑफ वेज पेरेंट्स आर मोस्टली वरीड कि मे बी हमारा बच्चा कुछ सीख नहीं रहा, बिकॉज जब आप एक ऑनलाइन में एक बच्चे को लैपटॉप दे देते, नॉर्मली किड्स आर, वो जाहिर है जब एक्सप्लोर करते हैं तो दे गेट इनटू गेमिंग। एंड सेकेंडली एक और चीज़ ये आती है कि जब यंगर स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे केजी है, ग्रेड 1 है, 2 है, उसमें नॉर्मल ये होता है कि जब आपका बच्चा घर पे है, जब घर पे बैठ के पढ़ रहा है, तो मदर्स इन स्पेसिफिकली मदर्स, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा आ जाती है, बिकॉज देन दे हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप एन आई इवन व्हेन द चाइल्ड इज एट होम। तो ये वो कुछ चीजें हैं जो कि डेफिनेटली इन अ लॉट ऑफ वेज एग्जिस्ट भी करती हैं, बिकॉज जब आप किसी भी स्कूल के बारे में बात करते हैं, मैं हमेशा जब भी कभी जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं एडमिशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम में, जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है एक ऑनलाइन स्कूल, वो हमसे अक्सर ही सवाल पूछते हैं कि भाई ठीक है, हम आ तो जाएंगे या हम कर तो लेंगे, बट हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, क्या हमारा बच्चा वाकई पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। फॉर देम आई ऑलवेज से कि एक स्टूडेंट किस सिस्टम में कंफर्टेबल है, ये उस बच्चे से ज्यादा कोई नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। अगर एक बच्चा सूटेबल है ऑनलाइन के लिए, इट्स परफेक्ट। अगर एक बच्चा है जिसको समझ ही नहीं आता, उसको शौक ही नहीं है, आप कुछ कर लें, आप उसको ऑनलाइन नहीं बिठा सकते। दिस इज अ चॉइस दैट अ चाइल्ड शुड हैव, ठीक है। हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, वी डिड नॉट हैव द चॉइस टू पिक इफ वी वांटेड टू स्टडी ऑनलाइन और इफ वी वांटेड टू स्टडी इन अ ट्रेडिशनल स्कूल। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें पता था हमें जाना स्कूल है, सुबह 8 बजे उठेंगे, भारी भारी बैग्स उठाएंगे, विल गो टू द स्कूल। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि वी कैन गो, हम लॉट ऑफ अस वर नॉट मेड फॉर फिजिकल स्कूल। बहुत सारे बच्चे नहीं इतना सोशल होते, उनको नहीं जाना होता, उनको दे लाइक स्टेइंग एट होम, दे लाइक बीइंग इन देयर ओन शेल, एंड इट्स ओके। बट एंड बिकॉज ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑनलाइन स्कूल भी एक ऑप्शन है जो कि अब कोविड के बाद लोगों ने डिस्कवर करना शुरू किया। इसके बेनिफिट्स हैं अगेन, लेकिन लाइक एनी अदर स्कूल, ये भी उन लोगों के लिए सूटेबल है जो बच्चा करना चाहता है। मेरे पास, हमारे पास इतने एक्सपीरियंस माशाल्लाह 4 साल से लर्न चल रहा है। 3 साल से हम लोग मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं पेरेंट्स से डायरेक्टली इन स्टूडेंट्स के साथ मैथ पढ़ाती आई हूँ, फिर पेरेंट्स के साथ डिस्कशंस में रही हूँ। तो हमने ये चीज़ हमेशा नोटिस की है कि अगर एक बच्चा, एक सिस्टम चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर एक बच्चा एंजॉय नहीं करता, आप उसको नहीं जबरदस्ती कर सकते। यू कैन नॉट फोर्स योर चाइल्ड इनटू अ सिस्टम। सो फर्स्ट द पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू लुक एट योर चाइल्ड एंड यू नीड टू देन डिसाइड कि व्हाट माइट बी सूटेबल फॉर माय चाइल्ड, ठीक है। तो ऑनलाइन इज जस्ट अनदर ऑप्शन, जस्ट लाइक पहले नहीं था, अब ये ऑप्शन अवेलेबल है। एंड दिस इज व्हाट आई कैन से इज वन ऑफ
one of the progressions that the entire school departments and education has eventually worldwide made. Because आपको टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा ईज दे दिया, इतना कंफर्ट दे दिया, दैट यू वर एबल टू क्रिएट एन ऑप्शन ऑफ दिस सॉर्ट, राइट? जहाँ तक डिफरेंसेस की बात है कि बेनिफिट्स क्या हैं, सबको पता है कि जब आप ट्रेडिशनल स्कूल जा रहे होते हो तो वहाँ पे आपके पास टीचर डायरेक्टली मौजूद होता है। इट्स वो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है, आप उसकी बात कर लो कि फेस टू फेस जो आपका बच्चे के साथ कनेक्शन होता है वो एकदम डायरेक्ट होता है, ठीक है? आप सोशली, आप ऑनलाइन स्कूल में, हम जो लोग हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ करके वो एक्सपोजर बच्चे को दे सकें जो उसको मिलता है, ताकि अगर वो हमारे पास आ रहा है एक ऑनलाइन सिस्टम में तो हम उसको सिक्लूड ना कर दें। So we try to do the best we can to provide that face to face interaction. अब जैसे लर्न में बहुत सारे ऑनलाइन स्कूल्स के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे रिलाई करते हैं, एंड वो आपको आप उनके पास जाओ, वो आपको बुक्स देंगे, करिकुलम देंगे, एलएमएस पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आप अपने हिसाब से जाएं, प्ले करें, पढ़ें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद द लेक्चर्स। आपका इस डेट पे एग्जाम होगा, इस डेट पे टेस्ट होगा, एंड देन दैट्स अप टू यू, आपके ऊपर, आप जिस पेज पे उसको लेके चलते हैं। कुछ स्कूल्स इस स्ट्रक्चर पे, इस मॉडल पे चलते हैं। कुछ स्कूल्स लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस करते हैं। कुछ स्कूल्स हाइब्रिड मॉडल्स पे अब मूव करें कि उनकी कुछ डेज आपकी जो है वो ऑनलाइन होती हैं, कुछ डेज उनकी जो है आपको ऑन कैंपस जाना पड़ता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि अब अवेलेबल हैं। बेनिफिट्स अगेन, आई कैन टॉक अबाउट ऑल द बेनिफिट्स दैट आर प्रेजेंट एवरीवेयर, कि आपको आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, जस्ट नीड अ गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड यू आर इन द क्लासेस, ठीक है? सेकेंड, आपके पास क्या आ जाता है कि आपको टेक्नोलॉजी वाइज आप अपग्रेडेड रहते हैं। आप उन टीचर्स, उन एक्सपर्ट्स, उन मॉनिटर्स, आपके पास एक ऑप्शन आता है, वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आता है कि मैं कहीं से भी, किसी भी स्कूल से अपनी पसंद का स्किल सीख सकता हूँ, ठीक है? आपके पास ऑप्शन आता है कि मैं ये वाला स्किल ले लेता हूँ, मैं ये नहीं पढ़ता। आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आते हैं। तो दीज आर ऑब्वियसली ऑल ऑफ द बेनिफिट्स, but we need to also understand that just like we have a traditional school as an option, we now have an online school as an option, and parents needs to see if what their child is more suitable to. Because if, like I said, if someone is not made for online, they will not fit in. If somebody is not made for physical, they will not fit in. So this is Exactly. something that you have to parents have to decide. थैंक यू सो मच फिजा। एक्चुअली ये चीज़ बहुत दफ़ा पेरेंट्स को समझनी चाहिए, Yes. बिकॉज एज अ मदर यू नो योर चाइल्ड द बेस्ट एंड यू नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स योर चाइल्ड विल अंडरगो। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो विजुअल लर्निंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दे डोंट नीड इवन ट्यूटर्स, और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल लीडिंग रोल में करें, हम ग्रुप्स में पढ़ना पसंद करते हैं। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि व्हेन यू आर इन दिस सिचुएशन, और आप एज अ मदर बच्चे के लिए क्या कर सकती हैं कि उनको डिफरेंट ऑप्शंस दे सकती हैं, और उसके बाद दे कैन नो व्हाट्स बेस्ट फॉर देम। और डिसीजन मेकिंग बहुत ही कम एज से अगर बच्चों को सिखा दिया जाए तो उनको लिए भी बहुत आसान होता है कि दे कैन गो विद द फ्लो। और वो देख सकते हैं कि ठीक है, 2 years बाद जब उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, ऑनलाइन का भी, होम स्कूलिंग का भी, उन्होंने ट्रेडिशनल यानी ऑन कैंपस का भी कर लिया, और उसके बाद फिर वो तीनों, जब उन तीनों के एक्सपीरियंसेस एक बच्चे को हो जाएंगे तो एटलीस्ट वो ग्रेड 5 में एटलीस्ट उसके पास इतना ऑप्शंस होंगे, और उसको ये भी पता लग जाएगा कि विच इज बेस्ट फॉर मी और मैं किस में सुटेबल हूँ। तो वो एक हमारा जो टाइम था पुराना वाला, जिसमें वी वर बीइंग फोर्स्ड फॉर द स्कूल बिकॉज वी डोंट हैव अनदर ऑप्शन। और इवन पेरेंट्स को अभी भी मेरे ख्याल में दे आर सो समवट रिलक्टेंट कि हम इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लें एंड कैसे हम लोग बिल्कुल वो कर लें जो ऑलरेडी जो Because इतने सालों से चला हुआ आ रहा है। जी असल में सोशल नॉर्मली आपकी सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन एग्जैक्टली फोर्सिंग द पेरेंट्स इनटू मेकिंग डिसीजंस। एग्जैक्टली सोसाइटी प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। अभी भी पाकिस्तान में आई थिंक स्टिल अ नॉर्म, क्या आप ऑनलाइन जा रहे हैं, पीपल डोंट, इफ यू टेल समवन दैट योर चाइल्ड इज ऑनलाइन, दे माइट नॉट कंसिडर इट एन एजुकेशन, दे सो माइट दिस इवन इज कंसिडर these are the society या that exists, यही, ठीक है? हाँ, यही चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स अभी तक डिसीजंस ले नहीं ले पा रहे, तो वही चीज हम लोग बच्चों में भी, जनरेशन में वही चीज ट्रांसफर करें, बिकॉज इफ यू आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर डिसीजन फॉर योर चाइल्ड तो वो वही चीज आपकी रिपीट करेगी, एंड जनरेशन टू जनरेशन वो अपने बच्चों के साथ भी वैसे करते रहेंगे। डिसीजन मेकिंग का मेरे ख्याल में
उस इंसान के पास राइट होना चाहिए जो कि वो खुद उसको अंडरगो कर रहा है. अ चाइल्ड हैज़ अ राइट कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, लेकिन वो तब होगा जब वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल. एक्सपीरियंस कर सके. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसीलिए आज हमने जो टॉपिक रखा है वो टॉपिक भी यही रखा है कि जो ऑनलाइन होम स्कूलिंग है वो मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान में कैसे वर्क करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो पेरेंट्स हैं वो अगर स्टेप बैक कर रहे हैं ऑनलाइन होम स्कूलिंग के लिए, वो ज्यादातर उनके लिए वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स और वो कंट्री टू कंट्री और स्टेट टू स्टेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो वो रिक्वायरमेंट्स वाली सारी जितने भी हमारी क्वेरीज है जो हमारे पास आए, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू आस्क फिजा और साथ में उनके दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं. तो साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, फिजा में बताइएगा कि ऑनलाइन स्कूलिंग की जो टीचिंग है वो कैसे है, डिफरेंट है ट्रेडिशनल स्कूलिंग से. अब ख्याल में आपने ये मुझे ऑलरेडी उसमें बता दिया. डू यू वांट मी टू चेंज द नेक्स्ट क्वेश्चन और आप इसको Yeah, मजीद we can इलैबोरेट move to the next question and then I'll eventually, इस ओके आंसर को मैं साथ ही साथ ओके कर लूंगी. ओके. सो हाउ डू यू सी ऑनलाइन एजुकेशन आफ्टर 15 ईयर्स? हमें तो बहुत ज्यादा अभी इस 3 सालों में, कोविड के सालों में हमें अच्छा लग पता गया कि हाउ इज दिस गोइंग एवरीथिंग, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आगे मजीद और चेंजिंग आएंगी, क्योंकि वी आर नॉट लाइक पुराना वाला वो सिस्टम सारा कुछ खत्म हो चुका है. वी आर हेडिंग, और उसके साथ हमारे बहुत सारे नए नए स्किल्स, नए नए कोर्सेज और काफी आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स पे आजकल काफी ज्यादा फोकस हो रहा है. मुझे याद पड़ता है एट अवर स्टेज पेरेंट्स वर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स. वो कहते थे दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. समर प्रोग्राम्स, समर वेकेशन, समर कैंप्स उस पर इंटरेस्टेड नहीं होते थे. स्कूल दे में वुड हो से रहा दे है वुड सब कुछ, क्या या जरूरत है. या एग्जैक्टली दे वुड से दैट टोटली वी आर डिपेंडेंट. स्कूल हमने फीस दे दी है, होमवर्क कर लिया है, बच्चा सो गया है, कार्य आ गए, पढ़ा दिया, दैट्स इट. बट दिस टाइम बहुत कुछ चेंज हो चुका है. तो इस चेंज के हवाले से अब मजीद और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं 15 ईयर्स में? फिजा विल लेट अस नो. ज़ाहिर है अभी से इतना ज़्यादा आ गया, तो आई फील कि इन द नेक्स्ट 15 इयर्स देन ऑनलाइन स्कूल विल बी, इट विल बी नॉर्मल. मतलब इट वॉन्ट, यस आई होप एटलीस्ट कि ये नॉर्म ना रहे कि स्टिल पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दैट. बट देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं. आई फील कि अगर मैं एजुकेशन वाइज देखूँ तो अभी इन द फ्यू ईयर्स ये चीज़ डिस्कस, लास्ट आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, डिस्कशन एक जिसका मैंने भी पार्ट लिया था, इट वॉज के इन द फ्यूचर टाइम अब स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं. एग्जैक्टली. Degree is important, but you need to learn more skills because we're developing, and obviously we're learning so much. अब when I feel कि जब ये चीजें, तो in the next 15 years ये चीज जरूर रहेगी कि आप अपनी customizable degrees बना सकेंगे, where you बिल्कुल. will be picking your own courses and then you will be making a personalized degree for yourself. सिमिलरली शॉर्ट कोर्सेज बढ़ेंगे. अभी जब पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का वर्क इतना ज़्यादा शुरू हुआ था, then you suddenly saw that there were a lot of people who were willing to teach it, and there were a lot of people who were obviously learn, demand and supply wala case hai. When people are willing to learn, then there are always somebody who is going to teach you, right? So ये चीज बहुत ज्यादा अभी बढ़नी शुरू हो गई. अब नेक्स्ट 15 years में तो ये चीज मतलब टेक्नोलॉजी की मतलब वाइज इतनी ज्यादा डेवलप कर चुकी होगी, आप इतना ज्यादा कर चुके होंगे. स्किल बेस्ड अगेन इज गोइंग टू बी समथिंग दैट्स गोइंग टू देयर. मतलब आप सिर्फ डिग्रीज पे नहीं रह सकते, यू नीड टू लर्न स्किल्स, यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन वन थिंग. सेकेंडली आई थिंक आई मूव दिस क्वेश्चन टू अली जाफरी बिकॉज उसकी थोड़ी फील्ड भी यही है स्पेसिफिकली, तो अली वुड बी एबल टू डिस्क्राइब दिस बेटर. व्हाट डू यू थिंक अली? Yeah, hello. Assalamu alaikum. वालेकुम Thank you, अस्सलाम. Fiza, and thank you for having me on this interactive session. I'm going to start off with my story with Learn Academy and how I actually joined them. So basically, I'm 24 years old, and मैंने जब join किया था, I was still a student myself. I was still studying, and fast forward to now where I'm like a working professional. एक चीज consistent रही है with Learn, that is कि this particular initiative, this particular institution is very purpose driven, and the purpose that I saw at the very start of it is still consistent and it's growing. And आप लोगों ने इसकी जितने भी aspects cover किए, you already know that it's based on empathy, it's based on the needs of the people all around the world at this current stage, जहाँ पे we are transitioning from a system. uh, like when we look around us, हम कोई छोटी सी चीज का भी अगर एग्जांपल लें, like a couple of years back, हमें हमें मतलब we were used to this habit of sitting in front of a television. हम उसके एडवर्टाइजमेंट्स भी पूरे के पूरे देखते थे. बहुत 10-15 minutes of advertisement for just like a 5 minute of content.
फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांजिशन होना स्टार्ट हुआ, वी गॉट आवर हैंड्स ऑन इंटरनेट। वो ट्रांजिशन जो था इट हैड एडवर्टाइजमेंट्स, लेकिन वो उनका ड्यूरेशन कम होता गया। और आहिस्ता आहिस्ता करके लाइक दिस इज समथिंग दैट्स वेरी जेनेरिक, जो हम सब ने एक्सपीरियंस की और सबकॉन्शियसली नोटिस भी नहीं किया, हाउ वी अडेप्टेड टू इट। So when we look at something as important and like probably one of the most important things in life as learning, उसको हम इस तरह से क्यों नहीं ट्रीट करते? उस तरह से हम उसको क्यों नहीं लेके चलते where it has to evolve? Obviously, the traditional schooling system and how we basically used to learn and we currently are learning was very successful and is very successful and will continue to be extremely successful, but उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको बेहतर तरीके से मतलब एक डायनामिक इसका एक सिचुएशन बनाना कि इट्स बेसिकली एडजस्टेबल टू द वर्ल्ड अराउंड, and that is what learn school has the best, right? So initially when we started off, और हम लोगों ने we introduced all of these programs like the digital media wala part and the leadership skills and liberal arts, entrepreneurship and coding, obviously something जो कि बहुत ही unorthodox है, something जो कि बहुत ही unheard of है, especially in the subcontinent, in regions close to the subcontinent. It was actually a very very positive leap. It was actually a very positive leap. It was something that was progressive. So to add on to the question, okay, in the next 10-15 years, obviously people are going to come towards something जो उनके लिए सबसे ज़्यादा optimal utility उनको देती है, and वो naturally उस चीज़ की तरफ gravitate कर जाएंगे. Like during the pandemic we saw okay, this was the only form of interaction, but slowly and gradually we saw okay, it's a more effective form of interaction for most people. Like Fizza said कि ठीक है, इसके अंदर कोई black and white नहीं है कि online schooling is the perfect solution, but it's an optimized solution. So in my experience, in my particular experience over the past 3-4 years with this institute, it has been exponentially growing for both the teachers, the people who are actually trying to pass on whatever skill sets they have, and the people who are trying to, obviously the students who are trying to learn them. So it's all about as we said efficiency, being more more future fit, and this thing will continue, and this thing will continue to become the norm slowly and Yes. gradually. So yeah, I really do believe in the next, I think I even think 10 years is a far-fetched idea. We are already in that phase where this has become the Exactly. norm. Mhm. Exactly. So अच्छा, एक और चीज, I guess Ifiza will answer that better because we have moms, और वो अक्सर हमारे लिए क्वेश्चन होता है कि हम ठीक है we are होम स्कूल, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक नॉट ऑनलाइन स्कूल्स के लिए हमारे पास एकेडमीज हैं, हाइब्रिड लर्निंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन को चूज करें, वाई लर्न, वाई नॉट एनी अदर प्लेटफॉर्म। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, अब तो भरमार हो चुकी है दैट इफ वी इवन गूगल डाउन, हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड ही नहीं बल्कि यूके, यूएस, हर जगह से हमारे पास ऑनलाइन स्कूलिंग्स हैं, इस्लामिक भी हैं और जो है ब्रिटिश करिकुलम को भी फॉलो करते हैं, अमेरिकन करिकुलम को भी। लास्ट ईयर से काफी ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस हो रहे होते हैं। अब मदर्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी ऑनलाइन एकेडमी में वी आर गोइंग टू इनरोल अवर चाइल्ड, बिकॉज यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग दिस, यहाँ पे ये बोल रहे हैं वी आर प्रोवाइडिंग दिस, सो व्हाई ओनली लर्न एकेडमी। और अगर किसी ऑनलाइन स्कूल में हमारे पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, यू हैव टू गो अहेड और आपको ट्रायल भी मिल जाता है, 7 डे ट्रायल ले लें, 1 डे ट्रायल ले लें, एंड देन उसके बाद फिर हम और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा कौन से वाले को सिलेक्ट करें, विच वन इज बेस्ट फॉर अवर चाइल्ड। तो अगर एज अ मदर, अगर मैं अपने बच्चे को एनरोल करवाती हूँ, सो आपको क्या लगता है कि एक मदर को क्या देखना चाहिए उस एकेडमी में, कौन कौन सी ऐसी मोटी मोटी चीजें जो आप एज अ सिंपल आप तरीके से बता सके कि मदर क्या देखें कि ऑनलाइन टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उस एकेडमी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और वहां पे एनरोल करने के बाद उनके लिए क्या आसानी पैदा होगी लेटर ऑन अगर उनको मजीद फिजिकल स्कूलिंग में डालना होगा, तो किस तरीके से कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखें ताकि उनको फिर आगे प्रॉब्लम ना हो कि अच्छा अब मैंने कर तो लिया है स्टेप, अब उसके बाद अब मैं यहाँ पे आके फंस गई हूँ, एंड देन शी विल बी लाइक वो इतने मुश्किल से स्टेप लिया था, अब वो एक कदम आगे बढ़ के 5 कदम दोबारा पीछे हो गया।
सो दिस इज द मेन रीजन के मदर्स जो है वो आगे जो है ना वो स्टेप नहीं ले रही होती. सो डू लेट अस नो दैट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ एन ऑनलाइन टीचर जो कि उनको पोजेस करना चाहिए, या अकेडमी में कौन से मदर को चाहिए कि वो चूज करें. देखिए, अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एकेडमी चूज़ करने के लिए चाहिए ना, तो वो सबसे पहली चीज़ है, आप उनसे ये पूछें कि इफ़ दे आर एफिलिएटेड, इफ़ दे आर एक्रेडिटेड, और आप उनसे वो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ मांगें. This is the most important thing for any parent to go to a school, because लेकिन जब फिजिकल स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं तो आप नॉर्मली किसी उनसे जाके डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते, बिकॉज यू नो कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, राइट. जब आप ऑनलाइन जा रहे हैं स्पेसिफिकली, अब जबकि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑप्शंस आपके पास हैं, बहुत स्कूल्स लोग हैं, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब. ठीक है, मैं ये नहीं कहती दे, बट सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि अगर आप किसी अपने बच्चे को स्कूल में डाल रहे हैं, यू डोंट नो हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू बी देयर. यू नीड टू मेक श्योर कि लेट्स से मेरा बच्चा 6 महीना, 1 साल, 2 साल यहाँ गुजार रहा है, उसके वो 1 साल 2 साल जाया ना हो. वो चीज़ ऑन पेपर मेरे पास हो, जो कि मिनिस्ट्रीज या नेक्स्ट स्कूल या कोई भी नेक्स्ट एकेडमी उस चीज़ को एक्नॉलेज करे. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उनसे स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछें कि आर यू रजिस्टर्ड विद समवन, इफ यस प्लीज टेल अस किस तरीके से, किससे हैं, खुद रिसर्च करें, देखें कि इफ दे आर प्रॉपरली प्रोवाइडिंग यू ऑल द लीगल डॉक्यूमेंटेशन दैट माइट बी रिक्वायर्ड. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है, देन यू मूव अहेड एंड देन यू स्टार्ट विद द डेमोज. आप ऑनेस्टली बताऊं तो अगर आप सबसे पहली चीज पे जाएंगे, आपके बहुत सारे स्कूल वैसे ही कट डाउन हो जाएंगे, एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद अ फ्यू ऑफ देम. देन यू डिसाइड कि अच्छा अब ये हो गया, तो आप डेमो लें, बिल्कुल लें. आप उनसे पूछें वो करिकुलम कौन सा है. अब ये है कि आई थिंक जैसे हमारे पास भी फेडरल बोर्ड है, हम कैम्ब्रिज पढ़ाते हैं 1 till 8, 9 and 10 हमारे पास फेडरल बोर्ड अवेलेबल है. तो आप चेक करें कि आपको जो बोर्ड्स वो दे रहे हैं, आर डू यू रियली वांट दोज बोर्ड्स फॉर योर चाइल्ड. आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस कि स्पेसिफिकली ये जो 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स हैं, 5 ऑनवर्ड्स, आई फील कि पेरेंट्स को थोड़ा देखना चाहिए कि वो किस बोर्ड में अपने बच्चे को एनरोल करवा रहे हैं, एंड उस हिसाब से लेके चलें कि इवेंचुअली. बट तो यस, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आप एक्रेडिटेशंस देखें. सेकंड स्टेप आप ये देखें कि उनके जो स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं, किसी एक्स पेरेंट से ज़रूर पूछें, किसी पेरेंट को रीच आउट करके उनसे उनका ऑनेस्ट एडवाइस लें कि किस तरीके का स्कूल है. बिकॉज आप भी अगर डेमो लेंगे तो 1-2 दिन के डेमो में आपको इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ आती. इट टेक्स टाइम. तो एंड ऑल्सो लुक इनटू द फैक्ट कि हाउ ऑनेस्टली दे आर providing you with the information. If a school is being honest with you from the start and they're honestly telling you everything about themselves, और आपको जो जो चीज़ें वो क्लेम कर रहे हैं वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं. लेट्स से कि अगर कोई एक हमें बता रहा है कि हम इस चीज़ें ये यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं, हमारे पास इतने टीचर्स हैं, बस इतने स्टूडेंट्स हैं, वो चीज़ आपको नज़र आ रही है, थोड़ा आप रिसर्च करें. रिसर्च करना इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज दिस इज इवेंचुअली आप 1 साल तो लगा, आप एक पेरेंट अगर किसी स्कूल में आ रहा है तो वो ये सोच के तो आएगा कि मिनिमम में 1 साल तो अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाऊं. तो दिस इज जस्ट द लीस्ट ऑफ द थिंग्स. सेकेंडली, ये चीज़ ज़रूर डिसाइड करें इफ़ यू वांट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्योंकि बहुत ये ऑनलाइन में एक आता है कि आप चाहते क्या हैं कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए, या आपको एक ऐसे स्कूल में जाइए जहाँ पे लाइव टीचर्स प्रेजेंट हो और वो एवरीडे एक स्कूलिंग की तरह ही चल रहा हो पूरा, के टीचर भी मौजूद है, होमवर्क्स मिल रहे हैं, चीज़ें मिल रही हैं. तो ये चीज़ें कुछ जो आपको डिसाइड करनी है कि मुझे किधर जाना है. So if you start ruling out things, then eventually that's how you go ahead and start. Even if अगर ऑन कैंपस के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तब भी हम रिसर्च करते ही हैं, बिकॉज वी एज अ पेरेंट्स हमारा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमने तो अपना इनपुट देना ही है. सो इफ यू आर रिसर्च, थोड़ा बहुत रिसर्च अगर आप ऑन कैंपस स्कूल्स की कर रहे हैं तो ऑनलाइन स्कूलिंग का भी इस तरीके से रिसर्च हो जाता है, और जाहिर है वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत फर्क पड़ता है. और सिंपली जिस तरह से फिजा ने कहा है, बेस्ट थिंग इज कि शी इज नॉट जस्ट टेलिंग अस कि यार यहाँ पर ही आपने एनरोल करना है, यही करना है, यूं करना है, नहीं, बट शी इज जस्ट टेलिंग अस द फैक्ट्स कि कौन कौन सी चीजें हमें पहले अपने माइंड में रखनी है और किस तरीके से हमने स्कूल्स को शॉर्टलिस्ट करना है. बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने फ्यूचर का, लेट्स सी, हमने अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है, देन वी आर डिसाइडिंग कि ओके आफ्टर 5 years, आफ्टर 6 years हमने यूं करना है, हमने इस बोर्ड में डालना है. तो वो पहले से आपको उसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है, एंड फॉर दिस प्लानिंग एंड एवरीथिंग, द डिसीजन मेकिंग एंड एवरीथिंग, यू नीड टू गो ऑन, मतलब थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा.
तो एक तो ये चीज हो गई, और उसके अलावा टीचर्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए इफ दे आर गोइंग फॉर द, इफ अ पेरेंट इज देखिए गोइंग फॉर एन ऑनलाइन? सबसे सी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एन ऑनलाइन सिस्टम इज कि सबसे बेसिक चीज ये आती है कि टीचर ऐसा हो कि उसको एटलीस्ट टेक्नोलॉजी, बेसिक टेक्नोलॉजी जो टूल्स यूज हो रहे हैं उसको यूज करने आते हो, ठीक है? दिस इज व्हाट वी लुक व्हेन वी आर हायरिंग. Secondly, somebody who is teaching students online has to be a very good communicator because एग्जैक्टली। अगर मेरी क्लास में 15 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो उनको हैंडल कैसे कर रहा है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल। एक टीचर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा, तो कोई बच्चा नहीं बैठेगा एग्जैक्टली। ऑनलाइन. You have to be very, matlab ek a student should come in the class and they should feel like, okay, this is my teacher and I need to learn and I need to sit down here. So that has to be, there has to be an aura, and it comes when the teacher is communicating. तो आपकी communication बहुत strong होनी चाहिए. Second, you have to be very quick in adapting stuff, क्योंकि online की जो teaching methods है वो बहुत तेजी से evolve होते हैं. You एग्जैक्टली। cannot, मतलब यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड, यू हैव टू बी रेडी टू इवॉल्व. आप एक ही चीज लेके नहीं चल सकते कि नहीं मैं तो यही पढ़ाऊंगा, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा. नहीं, यू हैव टू इवॉल्व. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक बैच डिफरेंट आता है, आप उसमें बहुत तेज चल रहे होते हो. सेकेंड बैच आपको पूरी अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ती है बिकॉज द सर्टेन काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यू हैव, देयर डिफरेंट टू डील विद. नॉट एवरी चाइल्ड इज सेम. Similarly, a group of kids when they're together to deal with them, to go ahead with a curriculum, it's not going to be same. बट So the दिस approach फ्लेक्सिबिलिटी इज ओनली इन द ऑनलाइन स्कूल। ये फ्लेक्सिबिलिटी it आपको has उधर to नहीं, be, yes. हाँ, क्योंकि आपको ऑनलाइन स्कूल में ये आपके टीचर, technically तो this is something that every teacher should do, even या if they're teaching physical, और ये आपको करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है. बट ऑनलाइन में ये चीजें जरूरी है इसलिए क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे के पास ऑप्शन होता है टू गो अवे वेरी क्विकली एंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. वो बहुत अच्छा है क्योंकि आपके सामने लैपटॉप ऑन है. नॉट अ पेरेंट भी हर वक्त नहीं बैठा होता और टीचर भी उसकी स्क्रीन हर वक्त नहीं देख रही होती. इफ अगर मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, आई कुड गो एंड ब्राउज हियर एंड देयर. So एग्जैक्टली। the child has options to move ahead here and there. तो वो टीचर को देखना पड़ता है कि okay, if I am communicating तो मेरे students engaged रहें मेरे साथ. They have to make their lessons creative. They have to find ways of assessing their children, be it calling out their names in the classes कि आप उनके names call out करें students के, आप उनको assignments ऐसे दें, आप उनको projects ऐसे दें कि आपको पता चले कि you know हाउ they दे आर are doing something. पार्टिसिपेटिंग, या They are एक्चुअली participating, they are not participating. वैसे भी एक बच्चे के लिए एक मदर का गोल यही होता है, क्योंकि हम लोग तो सारा वक्त नहीं रह सकते, हमारे लिए भी हमारी तरबियत का गोल भी यही होता है कि यू आर नॉट सपोज टू बी विथ योर चाइल्ड एवरी टाइम. यू डोंट नो, आपने कभी उनको सोसाइटी में अकेला भी छोड़ना है, और उसके बाद वो जो परफॉर्म करेगा दैट इज व्हाट इज नोन एज तरबिया. तो सेम गोज विथ कि टीचर भी आपके पास हर वक्त आपके साथ नहीं होती है. अगर वो आपके साथ नहीं भी है देन स्टिल यू नीड टू रिस्पेक्ट द टीचर एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द क्लासरूम और उसके रूल्स वगैरह फॉलो करना. तो मेरे ख्याल में कि ये चीज जो है वो बच्चे में ज्यादा एक डिसिप्लिन लेकर आती है. हमें लगता है कि ऑन कैंपस ज्यादा डिसिप्लिन आता है, लेकिन ये एक चीज जो आपको कोई देख नहीं रहा एंड देन यू आर डूइंग समथिंग करेक्ट, सो दिस इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज. अच्छा, होम स्कूलर्स के लिए फिजा आप क्या बताएंगे कि किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है? कि अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर आउट कर दूं कि बहुत सारे लोगों को होता है कि होम स्कूलिंग इज नॉट समथिंग ऑनलाइन और स्ट्रक्चर्ड. या होम स्कूलिंग इज आल्सो लाइक यू कैन ऑप्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होम स्कूलिंग. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर अनस्कूलिंग जहां पे बच्चा क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सारी चीजें कर रहा होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्ड होम स्कूलिंग जहां पे पेरेंट्स जो हैं वो एक प्रॉपर करिकुलम को फॉलो करके एक प्रॉपर ऑनलाइन अपने लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको भी प्रिपेयर करने होते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट होम स्कूलिंग. तो वो उसमें एजुकेशन किस तरीके से हेल्प करती है, दैट फिजा विल टेल अस टुडे. देखिए, ऑनलाइन स्कूलिंग आपको सबसे पहली चीज़ जो हेल्प कर सकती है इज़ गेटिंग योर चाइल्ड अ प्लेटफॉर्म जहाँ से उसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें मिलें कि ऑब्वियसली लाइक आई सेड डॉक्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट. आप होम स्कूलिंग में बच्चा सीखता बहुत है, बट समहाउ कभी-कभी ऐसा होता है कि लेट्स से जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे पास जब होम स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन के लिए, अक्सर उनका जैसे 4 सब्जेक्ट्स हैं, राइट? लेट्स से इफ अ चाइल्ड इज 7 इयर्स ओल्ड और सपोज इज फॉलोइंग, उसके पेरेंट्स एक ग्रेड 3 का करिकुलम लेट्स से उसके लिए फॉलो करें, ठीक है? अब उसमें क्या होता है कि व्हेन यू बीइंग होम स्कूल समटाइम्स सारे सब्जेक्ट्स में बच्चा एक लेवल पे नहीं होता. दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. मेरे पास जब भी होम स्कूलर्स आए उनका मैंने हमेशा टेस्ट लिया है ऑन द बेसिस, क्योंकि वो एक सर्टेन सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं
और किसी और सब्जेक्ट में वो शायद बिलो द लेवल होंगे। तो जी बहुत बिल्कुल ऐसा। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर एक पॉइंट पे आपके साथ ये होता है कि अच्छा ठीक है, इफ माय चाइल्ड इज डूइंग वेरी वेल इन मैथ, देयर आर अदर सब्जेक्ट देन दे आर लैगिंग बिहाइंड। तो जब आप किसी एक ऑनलाइन स्कूल का या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे ग्रुप स्टूडेंट्स, मतलब एक टीचर अवेलेबल है, आप उसका हेल्प लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट योर चाइल्ड इज गोइंग अहेड इन लेवल वाइज, मतलब वो हर ग्रेड के लेवल के साथ जो है वो प्रोग्रेस करता है। ठीक है, एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अम, हो सकता है somebody might be doing it well, but this is something that I have observed so far, कि मेरे पास हमेशा जो स्टूडेंट्स आए, they have been on different levels subject wise। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज आपको होम स्कूलर्स को एक हेल्प होता है, कि जाहिर है आपको स्टूडेंट्स समटाइम्स वांट to see if other kids are also following the same, being studied the same way that they are। ठीक है, एग्जैक्टली। आप जब होम स्कूल कर रहे होते हैं तो बच्चा अक्सर, जाहिर है, देर गोइंग आउट इन द सोसाइटी, देर गोना गो आउट मीट फ्रेंड्स इन द पार्क, एंड दे माइट नॉट फाइंड अदर स्टूडेंट्स बीइंग होम स्कूल। तो जब आप उनको एक एक्सेस देते हो, क्योंकि देखिए ये चीजें ना, ये लॉट ऑफ पेरेंट्स से साइकोलॉजी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर किड, ये चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू फील, नॉट फील अलोन इन व्हाट दे आर स्टडीइंग, व्हाट दे आर फॉलोइंग। जब वो एक ऐसा मेथड या एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ रहा होता है, तो उसको दिख रहा होता है कि देयर आर अदर्स आल्सो हु आर स्टडीइंग लाइक मी। वो रिलेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। We've had students who've come around from homeschool and they've performed really well because they were able to see कि नहीं, there are other students, they become friends, they make friends, and वो relatability वाली factor बहुत ज़्यादा उनका बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करती हैं। सेकंड, अगेन यू डू, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास कोर्सेज की जो वैरायटी है, जो मैंने पहले भी कहा था, आपके पास बहुत वैरायटी है। अम, एक पेरेंट हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। लेट्स से कि अगर मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची सर्टेन चीज़ सीखे, आई माइट नॉट बी एन एक्सपर्ट, सो आई कैन फाइंड एन एक्सपर्ट हु माइट बी बिल्कुल। एबल टू टीच माई माई डॉटर एग्जैक्टली। और सन। तो इसीलिए ऑनलाइन एजुकेटर्स बैठे हुए हैं कि वी कैन हैव एंड वी आर देयर टू टीच, तो ऑब्वियसली दिस हेल्प्स। तो होम स्कूलर्स के लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन बहुत हेल्पफुल है। इवन ऑन कैंपस स्टूडेंट्स को भी जरूरत पड़ती है ऑनलाइन की समहाउ किसी ना किसी पार्ट जरूरत ऑफ लाइफ पड़ती में। तो ऐसा नहीं है, ये कहना मेरे ख्याल में ये कहना ठीक रहेगा, क्योंकि आगे जाके बड़ी क्लासेस में वो लोग भी ऑनलाइन की तरफ स्विच हो ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो इट्स बेटर कि आप अर्ली ही स्टार्ट कर लें। अच्छा, इसके अलावा बिल्कुल। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जो हमें अभी वॉच कर रहे हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ और भी क्वेरीज आई थी, वो हम लोग इंशाल्लाह अभी लेने की कोशिश करेंगे इसी सेशन में। लेकिन अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है लर्न अकेडमी के हवाले से, या कोई भी होम स्कूलिंग के हवाले से, या ऑनलाइन स्कूलिंग के हवाले से, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, ताकि हम आपके क्वेश्चन को भी यहाँ पे फिजा से पूछ सकें। लाइव सेशन में थोड़ा सा आपके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आपको अभी ही लाइव आंसर मिल जाएगा, बट रिकॉर्डेड सेशन में इफ यू आर गोइंग डाउन द कमेंट्स, तो आपको मैं लिंक वगैरह भी फॉरवर्ड कर दूंगी फॉर द लर्न अकेडमी। और आगे जाके फिजा से ये भी पूछेंगे कि लर्न अकेडमी के बारे में वो हमें थोड़ा सा कुछ बताएं कि व्हाट इज लर्न अकेडमी। So basically, Learn Academy is a school that is operating from Pakistan. We are located in Karachi, and we are a school that caters students from kindergarten till grade 10. We have the curriculums that we are following is of Cambridge, and in 9, 10 we are following Federal Board. So we are registered with Education Ministry in Sindh and also Federal Board. तो हमारे पास ये है कि हम, और एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग स्किल बेस्ड कोर्सेज such as coding, entrepreneurship, leadership, liberal arts, digital media, and all of these courses that we are providing are also accredited by a body in Canada that is called Skill Development Council Canada. So whatever the courses, whatever the schooling that we are provided, that we are providing to the students are accredited and affiliated. So if a child comes to us, तो उनको कभी भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं आता। सेकेंडली, जो चीज़ें हम प्रोवाइड करें वो बहुत डिसरप्टिव प्राइस है, बहुत रीजनेबल प्राइस है, और हम इवन इन यूएई, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम यूएई, सऊदी अरब एंड पाकिस्तान मेनली, जो कि एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट आके एक ही जगह पे बैठता है, तो वहाँ पे उनको जो एक आई फील कि वो जो एक चीज़ होती है ना, कि सिर्फ सेम बैकग्राउंड के बच्चे हैं,
They get this global perspective as well, right? If I'm sitting in a class filled with students of different backgrounds, I'm eventually learning a lot from becoming friends with them. तो we've had this cases prior as well कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, एक बच्चा जो है वो सऊदी अरब में बैठे, देयर फ्रेंड्स वो बैठ के साथ ग्रुप स्टडी करते हैं जूम पे. ज़्यादातर ये चीज़ें हमने नोटिस की हैं 5 6 7 में होता है. उससे पहले तो इतना ज़्यादा बच्चों के पास शायद खुद परमिशन नहीं होती स्क्रीन टाइम की. But so yeah, this is what Learn Academy is basically providing to the students. ओके तो हमारा टॉपिक भी आज कुछ इसी तरीके से हमने डिसाइड किया था और बहुत सारे सवाल हमने कर लिए, लेकिन अब हम लर्न अकेडमी की तरफ आते हैं और लर्न अकेडमी के बारे में फिजा हमें ऑलरेडी बता चुकी हैं, वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हम और भी पूछेंगे कि क्या क्या कोर्सेज ऑफर करती है लर्न अकेडमी और लर्न अकेडमी इज हाउ लर्न अकेडमी इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर अकेडमी. सो फिजा. I feel one of the things that how Learn Academy is different. अभी specifically सबसे different point यही आता है कि हम registered भी हैं. We are providing proper documentation और हमारे पास जितनी भी courses हैं वो सारे accredited and affiliated हैं. I have courses जैसे let's say कि अभी मेरे पास अली जाफरी मौजूद है. He will further tell you about the courses. I have 6 to 7 courses जो skill development से accredited हैं and they are all helping a child from a very young age to be able to decide. Basically grooming पे help है, skill learning पे help है. तो दिस इज समथिंग एंड दोनों जो चीज़ें हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं. दूसरी चीज़ ये है कि एक और चीज़ ये है कि हम लोग जो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑन बोर्ड आते हैं बी एड फ्रॉम सऊदी अरब, जो मैंने आपसे अभी प्रायर भी डिस्कस की बात वो यही थी कि हम उनको इन अ लॉट ऑफ वेज अगर आप कुछ स्कूल देखो तो वो सऊदी अरब के बच्चों को एक साथ बिठाएंगे, यूएई के बच्चे एक तरफ, पाकिस्तान के बच्चे एक तरफ वाला. We don't do that. We don't believe in the fact कि हमें ये डिस्टिंक्शन करनी चाहिए and we should take away the fact कि वो एक global experience जो बच्चों को मिल रहा है वो we take that away from them. We don't do that. We have हमारी जो approach है वो face to face interaction है. So what we do is कि we have the student and the child present at the same time in a live session और वो रोज क्लासेस होती है जैसे मंडे टू Routine. फ्राइडे आई हैव क्लासेस गोइंग ऑन इन रूटीन. तो अ चाइल्ड नोज वो अब in Learn Academy what we do is we also have a schedule on a fixed schedule on which the class is going to be conducted. So your child is getting the discipline as well to wake up and they're getting like they have the discipline to wake up and take a class and they are being having back to back classes. Let's say अगर मेरे पास मॉर्निंग में एक बच्चे की मिनिमम 4 से 5 क्लासेस होती ही होती हैं, तो they do get that school like experience as well and they're being disciplined as well. So this is something that I feel के हम provide करें. We are providing fixed scheduled classes as well. So this is how I think we different learn is a little different. बाकी I have Ali, he might be I Yes, think Ali के लिए ही focusing next on question coding. है. जाफरी साहब, प्लीज डू लेट अस नो अबाउट द कोर्सेज और इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके आई विल लेट यू नो अबाउट द ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो फिजा ने मेरे साथ शेयर किया था और मैं उसको स्क्रीन पे सबके साथ ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूंगी. Ali Jafri, please do let us know about the courses that Learn Academy has to offer. Yeah, predominantly 6 sections के अंदर divided है हमारा पूरा curriculum, which includes courses like coding जो कि मेरी expertise है जिसके अंदर, and digital media as well. There are other courses like entrepreneurship, leadership skills, communication skills, and liberal arts. So it's a very STEM oriented curriculum that we have based around technology, based around art, और बेस्ड अराउंड थिंग्स दैट आर कन्वेंशनली हम इतना ज़्यादा इसको ट्रेडिशनल करिकुलम्स के अंदर नहीं देखते. सो द पर्पस ऑफ एडिंग ऑल ऑफ दीज कोर्सेज ऑन टॉप ऑफ द नॉर्मल सब्जेक्ट्स जो हम ऑफर करते हैं लाइक मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड all of those courses. This is a very skill oriented curriculum जो कि not only आपकी जो root like grass level के ऊपर एक जो बहुत ही फंडामेंटल कोर्सेज होते हैं उनके अलावा learn is offering all of these multiple subjects. Coding is essentially working around with programming languages, and you'd be surprised to know that we have students that are as young as 6 years old
who have been a part of my classes. एक ऐसी ऐसी यंग एज से कितने सोफिस्टिकेटेड जो कि सीमिंगली सोफिस्टिकेटेड कोर्स लगता है उसके अंदर एंटर होना, इट माइट सीम लाइक अ वेरी फार फेस्ट आइडिया, बट इट रियली इजंट। इस तरह नहीं होता, बिकॉज जो भी मेरे पास बैचेस आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है, एंड दे आर वेरी वेरी शार्प, दे आर एक्सट्रीमली शार्प। young minds हैं, they are very fresh, they are open to absorb information, to absorb knowledge। और जितने भी मेरे पास previous 5 या 6 batches आए हैं back to back, all of them have been incredible। And yes, so predominantly coding is one of them, with digital media which focuses around how to enhance your uh, media skills, including social media and social media marketing, and the things that are related purely to electronic media। और इन सब चीज़ों के अराउंड हम लोग जो हैं, we are upskilling them। And the curriculum includes liberal arts as well, it includes the entrepreneurship subject, which encourages हमारे जितने भी students हैं to explore and experiment with new ideas। क्योंकि वी आर स्टक इन दैट ओल्ड ट्रेडिशन के बस यही यही कुछ हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, मैथमेटिक्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, नो डाउट इट्स द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। उसी से आपकी ग्राउंड अप एक लर्निंग बेस बनती है, but exploring these other skills, like Fizz has already said, ke we are now moving towards a more skill centric world, rather than a more, Exactly. yeah, certification centric world। So this is what we have to offer। I would like to share here some of the certificates that Fiza shared with me. The students have got these certificates from Skill Development Council Canada. This was the last batch, yes. Okay, this is the last batch, and this is the certificate. It's the course duration is 135 hours. Yeah, and the training partner is Learn Academy. This is the second certificate. Again, in It's for communication, I think we it's have these. this is for communication development. Okay, and this that one was okay. This is awesome. That's also communication. We have coding also and digital marketing as well, just like these communication development. ओके सो ये सर्टिफिकेट शेयर करने का मकसद इट्स जस्ट सेम लाइक, क्योंकि ताकि बाकी पेरेंट्स को भी आइडिया हो जाए कि दे आर एफिलिएटेड, दे आर एक्रेडिटेड, और आपको फिर सेकंड थॉट्स ना आए कि व्हाई लर्न एंड व्हाई ऑलवेज लर्न। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग न्यू। अब आप हमें साथ साथ ये भी बताइएगा अकेडमी का कि कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं वो मैनेज की जाती हैं वर्क फ्लो के लिए, कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं लर्न अकेडमी, व्हाट आर दे यूजिंग, आर दे द सेम लाइक व्हाट्सएप एंड जूम, या इट्स समथिंग डिफरेंट? For classes, we obviously use what's Zoom and Google Classroom. We basically learn is basically in partnership with Google and Belta Lab. तो उसकी वजह से we are able to provide each one of our student with their own individual Google ID that gives them like unlimited like space to drive and all the Google applications that are there। तो उससे ये होता है कि फिर हमारी ज़ाहिर है वी नीड टू सिक्योर आवर गूगल क्लासरूम्स एज़ वेल, जहाँ पे कंटेंट अवेलेबल होता है। स्टूडेंट्स आइदर अपने प्रोजेक्ट्स शेयर करो तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट सिक्योरिटी एज़ वेल। एंड देन उसके साथ-साथ जो है वी आल्सो हैपन टू लाइक have Google Cloud, the fact that students are getting, this unlimited space in drives। तो वो जो चीज़ें हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो खुद क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उनकी स्पेस, क्योंकि आपके पास अगर इस तरह की पार्टनरशिप ना हो तो आपके पास गूगल बहुत लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही कम टाइम में फुल हो जाती है, एंड देन यू बेसिकली एंड अप लूजिंग ऑल ऑफ योर डेटा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, एंड हम ये चीज़ें बच्चों को भी स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं, तो दे कैन लाइक हैव देयर डेटा सेव्ड अप विद देम। बिल्कुल, बिल्कुल। आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट। बिल्कुल, हम कम्युनिकेशन के लिए वी आर यूजिंग ज़ूम टू schedule our classes, to make sure वो schedule के ऊपर चल रही हैं। Classroom to Google Classroom to basically upload our assignments, get feedback from them, grade them। और उसके साथ-साथ, like particularly in my case, I have to use a lot of
websites, a lot of applications to enable students to learn things at the fingertips of their uh, like at their fingertips. So हमारे पास we have multiple softwares like Scratch हो गया, which Yes. being used in coding. We have code.org, we have W3 schools. So ये like on a communication level we are using multiple platforms और फिर जो software उसकी side है, we ensure कि हम we are not using anything that is paid for by the student at the time of joining a class, and we ensure that it's easily accessible. अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं, टैबलेट से कर रहे हैं या डेस्कटॉप से कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ है ना, इट शुड जस्ट वर्क ऑन अ ब्राउजर और वो चल जानी चाहिए. दैट्स अ नंबर वन प्रायोरिटी. So yeah, it's a smooth platform जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना टीचर साइड से ना स्टूडेंट साइड से. अच्छा, द मेन क्वेश्चन जो अक्सर मिडिल ईस्ट कंट्रीज या डिफरेंट कंट्रीज, इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिकली द मिडिल ईस्ट, लेकिन यहाँ पे कंट्री टू कंट्री रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, सो यू नीड टू टेक केयर कि आपको जो स्कूल जिससे आप अपने अपने जहाँ पे साइन इन किया है बच्चे को, तो उनका अटेस्टेशन प्रोसेस कैसे काम करता है. और अगर एज अ पेरेंट, अगर आपने ये अभी आपको नहीं पता, आपने 2 to 3 इयर्स अपने बच्चे को ऑनलाइन स्कूलिंग कर लिया, एंड देन अ चाइल्ड वांट्स टू डिसाइड कि नो, आई वांट टू गो फॉर ऑन कैंपस स्कूलिंग, और बाद में अब उसके पास वो डॉक्यूमेंटेशन होंगे, तो फॉर द मिडिल ईस्ट कंट्रीज या पाकिस्तान के लिए वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनके अटेस्टेशन का क्या प्रोसेस होगा. सो डू लेट अस नो, खासकर वो माएँ जो हमें अभी देख रही हैं फ्रॉम रियाद इन सऊदी अरेबिया. सो दिस क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा हमसे पूछा गया था, फिजा इज गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट. ओके फिजा, डू लेट अस नो. यस, तो बेसिकली जो प्रोसेस है वो ये होता है कि एज अ स्कूल आप हमसे अप्लाई करते हैं, यू आस्क फॉर अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, राइट, एंड द रिपोर्ट कार्ड. तो व्हाट वी डू इज कि वी प्रिपेयर दीज डॉक्यूमेंट्स, एंड हम जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है उसको अटेस्ट करवाते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से, जिससे हम एफिलिएटेड है. अब once that has been stamped by the education ministry, उसके बाद वो फर्दर डॉक्यूमेंट कहीं पे भी जो भी आपकी नेक्स्ट स्कूल की रिक्वायरमेंट है, जिस भी मिनिस्ट्री से वो रिक्वायर करते हैं कि आप अटेस्ट करवाएं, वो वहाँ पे अटेस्टेशन एक्सेप्ट हो जाती है. अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रियाद हो गया या यूएई हो गया, ये स्पेसिफिकली दो केसेस है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो हैं वो बहुत एफिलिएट मतलब रिक्वायर करते हैं कि आप उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करो, Exactly. अदरवाइज दे डोंट लेट द किड्स इन. तो इस केस में ये होता है कि इनिशियली हम जो है यहाँ पे पाकिस्तान की एजुकेशन मिनिस्ट्री से अटेस्ट करवाते हैं, एंड देन हम पेरेंट को आपको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट इट अटेस्टेड बाय द फॉरेन मिनिस्ट्री हियर. ठीक है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जब आपके पास आता है तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता फर्दर. दैट इज अबाउट इट. अब लेट्स से कि अगर बाय एनी चांस, जैसे यूई में ऐसा होता है कि अगर बाय एनी चांस आप पाकिस्तान में नहीं करवा पाए अटेस्ट, या बिकॉज ये जो बाकी अटेस्टेशन है, यू हैव टू डू इट एज अ पेरेंट और समवन रिलेटेड टू द चाइल्ड. अगर आप वो चीज़ें नहीं कर पाते तो जो यूई में पाकिस्तान एम्बेसी है वो भी आपको अटेस्ट करके वो चीज़ दे देगी. द मेन प्रायर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का स्टैंप होना चाहिए. अटेस्टेशन, और वो वो आपकी स्कूल आपको एकेडमी से, प्रोवाइड हाँ, स्कूल वो प्रोवाइड करता एकेडमी प्रोवाइड करती है. अगर वो हम प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट आपके नेक्स्ट स्कूल कहता है आपसे, वो सारी रिक्वायरमेंट फिर इजीली फुलफिल हो जाती है. ठीक. यस. अच्छा, 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 इसके अलावा जो है हमने आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने लर्न एकेडमी से जाने के बाद किसी मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लिया हो? We have tons of students who've been passed out, and I still have a majority of students in Middle East, and even in mainly in Riyadh and Dubai, and never once they have had any issue in getting admission anywhere. उन सब ने हमसे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, उन सबको हमने पूरी अटेस्टेशन प्रोवाइड की, उन्होंने यहाँ से टेस्ट किया. Pakistanis who are living abroad, they've done it to students, parents, students who are not Pakistani nationals, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है. So they've gotten the attestations and they've gotten admissions I as would well. also like to share here the transfer certificate जो Learn Academy This is जो of आपको one offer of my करेगी. students, yes. Yeah, it is the This form is of the basically an attested one. It is the attested certificate of one of our students. ये TC जो है, this was I think sent to UAE. तो ये जो है इसमें attestations है, you can look into the stamps as well.
Yes. अच्छा, ये आपके साथ इसलिए शेयर की जा रही है कि ज़्यादातर पेरेंट्स को ये होता है कि हमारे साथ स्कैम ना हो जाए और उसके बाद हमारा पूरा ईयर ज़ाया ना हो जाए बच्चे का। सो दिस इज़ व्हाट वी आर शेयरिंग विथ यू टू जस्ट लेट यू नो कि ये दिस अकेडमी इज़ प्रोवाइडिंग यू विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, विथ ऑल द डिटेल्स दैट यू विल बी रिक्वायरिंग फॉर द किड्स लेटर ऑन। और उसके बाद लुक एट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस अकेडमी, कि वो किस तरीके से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का आपस में सारी चीज़ें दे हैव जस्ट क्लियर कट, दे आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, and they are just showing you all the samples and even of the past students की जो आपके पास certificates हम आपके साथ इस live session पे share कर रहे हैं. This is from Sindh board, the golden Yes, stamp. it was signed by Sin. Yeah, no, this golden. Yes, basically this TC was attested by Sin Board Pakistan. Okay. So that was the education ministry. We had it signed by Sin Board, and then it was further attested by the other bodies that the school required. ओके, सो दिस इज द एक्चुअली द लीविंग सर्टिफिकेट। और इसके अलावा मेरे ख्याल में जिस भी स्कूल में आपने एडमिशन करवाना होगा बच्चों को, उनको इसी चीज की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद उसके एक ग्रेड पहले का जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको लर्न अकेडमी से मिल जाएगी। तो आपके पास जब रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो दैट्स इट मेरे ख्याल में। फॉर मिडिल ईस्ट ये रिक्वायरमेंट है, एंड आई गेस फॉर यूएई एज वेल, लेकिन पाकिस्तान में इट्स समथिंग डिफरेंट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डू करेक्ट मी। पाकिस्तान में इट्स समथिंग, इफ यू आर इनरोलिंग योर चाइल्ड इन ग्रेड 5 और ग्रेड 6, और उससे पहले बच्चे ने जहां पर भी पढ़ा हो, दे आर There जस्ट has गोइंग टू to be an क्लियर द entry एडमिशन test. टेस्ट, entry test. Okay, so for Yes. Pakistan it's In only the Pakistan, entry or mainly admission it test. is that they, yes, but even if anybody in Pakistan wants to have the attestation, then they can have. The attestation is required for all the students, irrespective they're in Pakistan or Middle East. So yes, the attestation is available for everyone. However, most of schools in Pakistan don't require it. They just require report cards and a transfer certificate. They just need to see if the school is, if the child has studied, and mainly they focus on the entrance test that they take. ओके, थैंक यू सो मच फिजा। आई गेस इतना ज़्यादा जो है वो क्लियर फिजा ने भी गाइड कर दिया है, और कोडिंग इंस्ट्रक्टर मिस्टर अली जाफरी ने भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई कोर्सेज के हवाले से, और उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से एक्स्ट्रा कोर्सेज जो हैं वो सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, और साथ में बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी वर्क किया जा रहा है, और सच विद स्कूल इन्वायरमेंट, स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के साथ। और इसके अलावा फिजा ये चीज भी बताएगा कि ग्रेडिंग सिस्टम किस तरीके से, इवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस है, और असाइनमेंट्स वगैरह का वो क्या सी। Basically, at Learn, what we do is we grade the students on three levels. One is the quiz, class participation, class attendance, and projects. तो हमारे पास मिड टर्म्स एंड फाइनल टर्म्स होते हैं बिफोर प्रायर टू एवरी वन ऑफ दोज एग्जामिनेशंस। ये तीन चीज़ें हैं जिस पे टीचर्स टेस्ट करती हैं। क्विज जो है वो 60 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम वन आवर का टेस्ट एग्जाम जो है गूगल फॉर्म पे प्रिपेयर होता है स्टूडेंट्स के लिए। 20 मार्क्स प्रोजेक्ट्स के होते हैं, उसमें से रिमेनिंग जो है वो 10 मार्क्स क्लास अटेंडेंस एंड 10 मार्क्स क्लास पार्टिसिपेशन के होते हैं। तो obviously we do encourage the students to be regular in the classes, to be present in the classes, ताकि वो interaction रहे. So obviously we've given this part as an evaluation and grading system as well. ओके, तो इट्स समथिंग लाइक ऑन कैंपस का जो वो है स्ट्रेटजी, बिल्कुल Process है सेम ही बिल्कुल. है, या बिल्कुल। Yes. तो इसके अलावा आप टीचर्स के बारे में आप हमें बताइएगा, लर्न एकेडमी में जो टीचर्स जो काम कर रही हैं, बच्चों के ऊपर वर्क कर रही हैं, उनकी वो किस तरीके से बच्चों के साथ कम्युनिकेट करती हैं, और जो जो टीचर्स आप लोगों ने हायर किए हैं, व्हाट क्वालिटीज डू दे पोजेस। Normally जो prior मैंने discuss किया था, the qualities that we want the teachers to have initially, this is something that we work on. हम now and then teacher training रखते हैं, ताकि हम teachers के साथ, the management is in constant contact with the teachers and the students, right? तो हमारा ये है कि अगर मैं टीचर का communication process बता दूं, तो उसमें ये है कि टीचर्स के पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एक होता है कि वो लाइव क्लासेस में मौजूद होते हैं, स्टूडेंट सामने होता है, एक इंटरेक्शन वहाँ पे होती है। Second, they have Google Classrooms that have students and teacher in it. जो कि students can ask the question and the teacher is supposed to reply to the student, cater the student, जो भी test है, जो भी announcement है. It's like a diary of the child where the teacher is posting any sort of announcement that they want to make. And in that, in Google Classroom, the communication has to be it's like a two-way communication, that the student can also post and the teacher can also post, and they can have a communication. Right? Normally ये two modes हैं. इसके अलावा what we do is if let's say if there is a problem that the child is facing,
or if something the parent wants to discuss with us, if their child is struggling or anything, so we are always available to set a meeting with the teacher. Because obviously online में सबसे आसान है कि आप टीचर के साथ फौरन मीटिंग सेट कर दें. Exactly. if there is any trouble you can always communicate to us, and वो communication बहुत तेज होता है. तो हम फॉरेन टीचर को इन्फॉर्म कर देते हैं, हम फॉरेन टीचर के साथ मीटिंग आपकी सेट कर देते हैं. सो यू कैन सिट विद द टीचर एंड डिसाइड व्हाट प्रॉब्लम्स एंड वट एवर यू नीड टू डिस्कस विद द पेरेंट एंड द टीचर. तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास अभी है जो हम यूज करते हैं with So the it's not teachers. about the only group के साथ डीलिंग नहीं है, बल्कि इंडिविजुअली वन ऑन वन भी है. तो Individual one-on-one. बेसिकली स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स की जरूरियात पे भी ज्यादा फोकस हो रहा है. तो इट्स जस्ट क्योंकि हमारे पास तो अभी हमारे सामने हमारे पास एग्जांपल मौजूद है. कोडिंग इंस्ट्रक्टर जो है लर्न एकेडमी के, वो हमारे साथ मौजूद है. तो द टीचर हियर विद अस. और उसके अलावा जो टीचर्स हैं वो भी ऑब्वियसली बहुत ही अमेजिंग होंगी. इसके अलावा अच्छा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं सेशन हमारा. आप फिजा बस ये बताइएगा कि कोई एक्स स्टूडेंट्स जिसकी परफॉर्मेंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो, जो अभी क्योंकि अक्सर ये होता है had मदर्स जो होती हैं वो ये कह रही होती हैं कि हमें पता चले कि अच्छा यहाँ से कोई पास आउट होकर गया है तो हमें पता चले कि यार वेयर दे आर स्टैंडिंग. तो ये मेन चीज है. नहीं, we've had a good share of ex-students. I think one of them is I have a student in Dubai who happens to be sort of like she's an actor and she lives in Dubai. So yeah, we call her Lizzie. Her name is Ulu Washei, and she's an actor. वो हमारे पास थी, and I think she passed out 2 years ago. So she was a student that I taught myself. I used to teach back then, and she was one of my students. So one of them, it's her. I have recently come across one of my students who passed out last year. Uh, Last year, yeah, almost 1.5 year ago, and she is now she's a cadet in a cadet college in Mardan, Oh, and we're very proud of her. And one that's of very his is actually working with us as an intern. She takes our substitute classes and she's working with us. So yeah, we've had a good share of students with us okay. in the past. Thank you so much for sharing this, Fiza, and thank you so much, Ali Jafri, for taking out time for discussing everything that we, as a parent, because we are curious to know, we are very like बहुत ही ज़्यादा like we're stressed that if we are making a right decision or not. So if any one of you अगर किसी से miss हो गया हो ये session, and if you would like to join this session again, you can still see the recorded session. You can watch that recorded session on the HSP page, and even you can share it with your loved ones if you are if you want them. अगर कोई आपके relatives में या friends में जानना चाहता है कि how does online schooling works, because what the main issue in this Middle East is the fees and the transportation, the convenience, और ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम यहाँ पे अब जो आ रही हैं एक्सपर्ट्स को, दिस इज द मेन प्रॉब्लम. और इसकी वजह से अब हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ अकेडमीज दैट आर ऑफरिंग ऑनलाइन ट्यूशंस. और साथ में हमें बाकी चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए वी जस्ट फाउंड आउट दैट दिस इज द कंप्लीट पैकेज अ पेरेंट कैन हैव फॉर देयर चाइल्ड. और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है, इट्स फ्लेक्सिबल, इट्स सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड, जहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है. यू आर गेटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड एजुकेशन, यू आर गेटिंग ऑल द टीचर्स and also extracurricular activities like other skills as well. So do let us know. अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो हमें कमेंट कर सकते हैं आप. और मैंने लर्न एकेडमी की जो वेबसाइट है वो भी शेयर कर दी है कमेंट्स में, आप प्लीज उनको विजिट कीजिएगा. और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप फिजा को भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. लर्न एकेडमी वाली वेबसाइट पर भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप उनको जो है वो क्वेरी जो है वो उनको पास ऑन कर सकते हैं. इसके अलावा इफ यू वांट मी, अगर मैं आपको मुझसे अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस मुझे अपना शेयर करना है या आपने मुझसे पूछना है, यू कैन ऑल्सो मैसेज मी. आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट लर्न एकेडमी हैज टू ऑफर. वरना इसके अलावा अगर आपसे सेशन मिस हो चुका है या आप किसी और कोई शेयर करना चाह रहे हैं तो यू कैन privately share as well, and you can tag everyone as well. Thank you so much for your time, Fiza. Thank you so much for Thank you so much, Hemant, for having us. no Yeah, let's thanks for having us. thank you so much. और inshallah we are
just going to have another live session inshallah. हमने पहले भी फिजा के साथ किया था. अगर for instance in future अगर आपके और courses आ रहे होंगे, or I hope and I wish I'm just saying that inshallah it will come. और भी कोई Inshallah. चीज आ रही होगी तो inshallah do let us know and I'll just share it on my group. Thank you so much. Sure. Thank you so much, Ayman. Thank you so much for having us. Allah It was Hafiz. amazing. Thank you. Allah